Everyone, very good evening. I hope you all are good and doing well. I hope your vacation was good also. Everyone enjoyed? Okay. So today in the class, what we are going to do, we will wrap up gravitation in fact. ठीक है? तो आज के क्लास में वी विल रीड बेसिकली किसी तरह के सैटेलाइट्स होते हैं और वेटलेसनेस क्या होता है एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद रिवीजन कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था. वी स्टार्टेड विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना. सो अगर अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ टू मासेस है, m1 है और m2 है, तो ये दोनों मासेस अगर पास में रखे हुए हैं, डन है, देन नेचुरली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, राइट. और मैंने बोला था कि अगर वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर जा नहीं रहे, इसका मतलब है कि सम एक्सटर्नल फोर्स हैज डन वर्क ऑन इट, और वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं -G m1 m2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस, दैट इज, है ना. उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारे पास मोर देन टू मासेस हैं, सपोज कर लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे हमने तीन मासेस को लाकर सजाया, m1 m2 और m3. तो अगर इस सिस्टम में कितना वर्क करना पड़ा इस अरेंजमेंट को बनाने में, या फिर अगर पूछता है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो कैसे बताओगे. मैंने बोला था कि सारे पेयर्स को ध्यान से लेना, लाइक बिकॉज ऑफ each टू पेयर पोटेंशियल एनर्जी विल एग्जिस्ट, राइट. तो मैंने ये भी बोला था कि अगर पेयर करने में भूल हो सकती है, तो यू हैव टू रिमेम्बर वन फॉर्मूला एंड दैट इज nc2. यानी कि n क्या है, n इज नंबर ऑफ मासेस, नंबर ऑफ मासेस दैट यू आर डीलिंग विथ. सो ट्रायंगल के केस में, इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी मासेस वी आर डीलिंग, थ्री मासेस. तो यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे, 3c2. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 - 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल. सो दिस विल बी नथिंग बट 3. सॉल्व करोगे, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 × 2 × 1, like that. 1 factorial is 1, 2 factorial 2 × 1, that is 2. So here 6/3 something, 6/2 it's coming, so 3. थ्री पेयर्स में यहाँ पे क्या क्या होगा, m1 m2 एक होगा, सो -G m1 m2/a. दूसरा पेयर होगा तुम्हारा -G m2 m3/a. तीसरा होगा -G m1 m3/a. तीनों को जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो that is how we were dealing with what potential energy. Now let's move on to next. उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमने क्या फॉर्मूला देखा था वहां पे. uh, अगर अगर हमारे पास एक मास m है, तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट p ले लो, p पॉइंट पे कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है, जिसको हमने Gm/r² बोला था, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू. डन. और अगर पोटेंशियल की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो वो कितना होगा, -Gm/r. सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. उसके बाद मैंने तुम लोगों को रिलेशन भी बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में. तो dv, दैट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इज नथिंग बट -g डॉट. और यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड को eg से दिखाया है, तो यहाँ भी मैं सेम लिखने वाली हूँ. ग्रेविटेशनल फील्ड को जनरली हमने स्मॉल जी से दिखाया है ना, तो यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया, तो चलो ऐसे ही लिखते हैं, -E.dr या dl जो भी. ठीक है, सो लाइक दैट, इसका हमने यूज भी किया. तो दिस इज व्हाट वी स्टडी. उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेल के लिए डिस्कस किया था. सो सेल के आउटसाइड पॉइंट पे कितना होगा, अगर यहाँ पे चलो 3 पॉइंट लेते हैं, O1, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं O3. सो पोटेंशियल एट O कितना था, अगर इसका मास m ले लो, तो कितना था, -Gm/, O1 की मैं बात कर रही हूँ, O पे. ठीक है, तो O डिस्टेंस को आप R1 डिस्टेंस ले लो, O1 के लिए आप इसका रेडियस R ले लो, और O3 को आप क्या मान लो, O3 को आप मान लो R2.
So this is minus gm by r1, and V01 will be minus gm by r2, और V02 will be minus gm by, सॉरी, 03 की मैं बात कर रही हूँ, 0 0 1 0 2 ही रहने दो इसको। तो 0 2 इनसाइड का पॉइंट है ना, और इनसाइड पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या आया था, पोटेंशियल आया था सेम एज दैट ऑन द सरफेस, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, जीरो। तो माइनस जी एम बाई आर, दिस इज व्हाट वी गॉट, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, अगर यहाँ पे मास इसका भी एम मान लो, तो आउटसाइड पॉइंट पी ले लो, सरफेस पॉइंट क्यू ले लो, कोई भी इनसाइड पॉइंट आर। इनसाइड पॉइंट पे मैंने निकालने के लिए दिया था, तुम लोग ये वाला मुझे बताओगे वी आर कितना है। यस, nobody is here, so there's no use of writing it like this. So I will just move on with BP. That was कितना आया था, minus gm by r if this distance is r, and dq is how much, minus gm by uh, capital R. So this is what we got, and this was your homework. I hope you all have done it. I know. Sorry, hello Shivangi. Okay. So let's move ahead. What else we studied in the previous class? We studied velocity of satellite. So velocity of satellite को हमने डिराइव किया था, और वहां पे हमारा डेरिवेशन करने के बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको हम बुला रहे थे, इसको हमने क्या बुलाया था, एक और नाम दिया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो, लाइक वन थिंग इज एट द सेंटर, और उसके सराउंडिंग में अगर कोई भी चीज राउंड एंड राउंड जा रहे हैं अंडर द of gravitational field, then velocity को आप क्या बोल सकते हैं? Yeah, Shivangi, I just asking, like, just asking. Yes, yes, okay, yeah, yeah, correct, correct. Okay, so orbital velocity we can write as what, root under g m by r. Okay, you need to be careful here कि m किसका मास है, r on the radius. So r is basically line distance between these two particles. And this m is basically mass of something that is orbiting. So यहाँ पे अर्थ को हमने क्या माना है, सेंटर पे, और इसको ऑलमोस्ट रेस्ट में माना है ना, इसके अराउंड सैटेलाइट ऐसे जा है। सो यहाँ पे जो मास है वो किसका मास है, सैटेलाइट का मास। यानी कि जब भी तुम वेलोसिटी निकालोगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे, वहां पे जो मास होता है वो उस बॉडी का मास होता है जो कि चारों तरफ घूम रहा हो ना, वन दैट यू हैव टेकन एट रेस्ट, इसका मास नहीं है। तो दिस वन यू नीड टू टेक केयर। ओके, नाउ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हमने निकाला था, वहां पे मैंने बताया था तुम लोगों को टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई किया था हमने, है ना। तो सिंपल है, ये अभी भी कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या है, जी एम बाई आर। दिस आर इज व्हाट, दिस आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, दिस आर इज व्हाट, इट इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सो दिस इज योर बी। और यहाँ से मैंने ये भी प्रूव किया था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कुछ ऐसा आया नहीं, है ना। चलो, now what is this energy of satellite? So if you talk about energy of satellite, so हमने तीन एनर्जी डिफाइन किए थे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड इन द लास्ट टोटल एनर्जी। तो एनर्जी पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो दो मास सिस्टम है, इसका मास अर्थ का एम ई ले लो, इसका मास एम एस ले लो। सो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी एम ई एम एस डिवाइडेड बाई आर, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इनटू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर, क्योंकि अर्थ तो रेस्ट में है, राइट। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे, वेलोसिटी कितना आया था, जी एम, एम क्या था हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, वहां पे मैंने मिस्टेक किया, आई एम रियली सॉरी। दिस मास इज नॉट मास ऑफ सैटेलाइट, आई एम्फसाइज इट सो मेनी टाइम्स, सॉरी, रियली सॉरी, ओ माय गॉड।
really a mistake happened here. This is mass of earth here basically. So mass किसका लेना है, जो कि तुम्हारे रेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट कैसे किया था, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू दैट इज एम ई एम एस डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और इसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज मास ऑफ सैटेलाइट v का स्क्वायर बाय आर से इक्वेट किया था, है ना। सो एम एस को कट जाएगा, एम ई विल बी देयर, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ जब मैं लिखने लगी तो आई गॉट रिकॉर्ड, sorry, I did the mistake. So up into mass of satellite into velocity of satellite, this by r root होता है, उसका स्क्वायर किया, रूट हट गया, तो दिस इज दिस। तो वैल्यू कितना है हमारा, जी एम ई एम एस डिवाइडेड बाई टू, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों को आप जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस जी एम ई एम एस बाई टू आर, सो दिस इज टोटल एनर्जी। मैंने रिलेशन भी आप लोगों को बताया था कि जो टोटल एनर्जी होता है मैग्नीट्यूड वाइज, वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, and this is equal to half to the potential energy। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आया, रिलेशन डायरेक्टली पूछा है कि रिलेशन बताओ क्या है, सो डायरेक्टली यू हैव टू जस्ट पुट द फॉर्म Earth, satellite, and weightlessness. This is not much of weightage, but I just wanted to introduce this thing to you because ये interesting लगता है ना, and है भी interesting. These are quite real life things happening. क्योंकि हमारे surrounding में we are just surrounded by such things. Then, तो Earth के कितने satellites और सैटेलाइट का यूज क्या है, पहले तो यूज देखते हैं। कम्युनिकेशन में, जैसे तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम रेडियो स्टेशन को सुन रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, सो मेनी लाइव ट्रांसमिशन, analysis of weather condition, weather forecasting and everything for geographical purposes, I mean कहाँ पे पोलरिज्म में क्या चल रहा है, या फिर कहाँ का geographically which place is getting affected in what way, those studies also we can done through what satellite। and how, तो satellites basically दो तरह के सारे purposes के लिए, and geostationary satellite and polar satellite। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है रेस्ट। तो ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और पोलर सैटेलाइट कहने का मतलब ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के पोलर रीजन के अराउंड घूमते, ठीक है, तो दिस इज पोलर सैटेलाइट। विल टेक a look at it। So let's first look at the geostationary satellite। You see here, this is the satellite। So geostationary satellite since अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, अगर अगर मैं दौड़ रही हूँ, दूसरा इंसान भी दौड़ रहा है, और हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, इसका मतलब ये है कि हम दोनों ही सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं। इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है वो अर्थ का रोटेशन का जो ऑर्बिट है, अर्थ ऐसे घूम रही है ना, यानी कि इक्वेटर, इक्वेटर का लाइन क्या होता है, इक्वेटर यही है ना तुम्हारा ऐसे। सो इक्वेटेरियल प्लेन में ही तुम्हारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी घूमना होगा, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है अपने एक्सिस पे, तो सैटेलाइट को भी कहीं ऐसे ही घूमना होगा। डन, सो ऐसे घूम रहा है, प्लस फिर सेम डायरेक्शन में जाने से नहीं होगा। एक और कंडीशन है कि दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों की टाइम पीरियड सेम होनी चाहिए। जितने टाइम में अर्थ एक राउंड राउंड लेगा उतने ही टाइम में सैटेलाइट को भी एक राउंड कंप्लीट करना होगा, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम। So satellite is circular orbit around the Earth in the equatorial plane. Why? I answered. And time period should be same as that of time Earth requires to take one rotation around its own axis. That is the reason of day and night. So time that is equal to 24 hours. So basically T कितना होगा geostationary satellite का भी 24 hours. ठीक है? So this is this. Then and it will appear stationary when viewed from a point on the earth, because we is standing on the earth, we are also moving same as the earth is moving on its axis। ठीक है, नाउ इसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला अगेन टू पाई आर बाई वी करोगे, है ना, टू पाई आर बाई वी। अब देखो ये सैटेलाइट कितने दूरी पे, ये सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से ये आर डिस्टेंस ले लो यहाँ तक का, सपोज यहाँ से एच हाइट पे है, सो
टोटल कितनी दूरी पे है, आर ई प्लस एच। तो रेडियस, इस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, इस ऑर्बिट का रेडियस, आर का वैल्यू कितना है, 2 आर ई प्लस एच। और वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी मैंने तुम लोगों को बताया था, वेलोसिटी अभी भी हमने देखा, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय ऑर्बिट, तो आर ई प्लस एच, ऐसे। डन। इस आर ई प्लस एच को ऊपर लेकर जाओगे, रूट अंडर जी एम ई, आर ई प्लस एच 1 + 1/2, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। Same thing it has done here, and it has tried to calculate the what time period is 24 hours for height of this. So basically geostationary satellite को हम लोग इतने हाइट पे रखते हैं, किसी भी हाइट पे नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी हाइट के लिए टी हमारा 24 आवर्स नहीं हो। दिस इज फॉर वन पर्टिकुलर एज, so it is this. Again, it's not that significant. You don't need to remember this. What you need to keep in your mind is कि geostationary satellite क्या है, कैसे ऑर्बिट करता है, किस डायरेक्शन में ऑर्बिट करेगा, टाइम पीरियड क्या होनी चाहिए, और उसके लिए पर्टिकुलर हाइट पे वो रहेगा। सो दैट हाइट इज इन हियर। ओके, चलो, तो इसका काम क्या है, टेली कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन मीनिंग मोबाइल फोन से जो बातें कर रहे हो, all this sort of communication one to one, right? Mass communication, I mean television, radio, this whole thing. ये हमारा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ व्हाट आर पोलर सैटेलाइट? सो पोलर सैटेलाइट बेसिकली उनका जो ऑर्बिट होगा वो पोल से क्रॉस कर रहा होगा, यानी कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ, ये इक्वेटर लाइन होता है, ये पोल को कनेक्ट करने वाला लाइन है। तो जब ऑर्बिट ऐसा है तो वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। पोलर और पोलर सैटेलाइट का ऑर्बिट ऐसा है, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस। अब तुम ध्यान से सोचो, जैसे ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है और ऐसे ऐसे ऑर्बिट कर रहा है सैटेलाइट, और अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, यानी कि जब सैटेलाइट वन टाइम पीरियड को कंप्लीट करेगा तब वो अर्थ के कोई थिन पोर्शन को स्कैन कर रहा हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, अर्थ भी तो घूम रही है ना, किसी टाइम पे ये वाला पोर्शन अर्थ का स्कैन हो रहा है, कभी ये पोर्शन, कभी ये पोर्शन, कभी ये, कभी ये, इस तरह से अर्थ के सारे पोर्शन धीरे धीरे स्कैन हो। डन है, क्लियर है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो इसका इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, जैसे अगर तुम्हें सपोज कर लो कि न्यूयॉर्क का वेदर हमेशा देखते रहना है, तो you can have a satellite in polar region, and अगर certain like कुछ कहीं तो एक लोकेशन पे तुम्हारा क्या होगा, न्यूयॉर्क होगा, और उस रीजन को सैटेलाइट स्पैन कर रहा होगा। Then, so these are quite technical things. The altitude of polar satellite is lower than that of geostationary satellite, so इसको lower रखते हैं so that it can give us more idea of कि अर्थ पे क्या चल रहा है, ठीक है, more clear and concrete idea, ठीक है। So it is something like this. रोटेशन सैटेलाइट टाइम पीरियड 3 आवर्स, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें अर्थ को स्पैन करना है, डन, सो दैट वी कैन गेट काफी छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स पे वी कैन गेट इंफॉर्मेशन, राइट। अगर एक ही एरिया को स्पैन करने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो हमें जो जो फोरकास्टिंग दिन में करना था वो दोपहर में कर रहे हैं, सो वी नीड इट टू बी फास्ट। This satellite can view only small strips of Earth in one orbit. Done it. The whole Earth can be viewed street by street during the entire day. The thing I said, street by street throughout the entire day we can see, है ना। चलो, क्योंकि अर्थ घूम रही है ना, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट की आंखों के सामने जो है स्ट्रिप, वो स्ट्रिप चेंज है। Done? तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, it is all I don't know how to pronounce it. I don't know why. Yeah, meteorology, basically. Sorry, again, I'm not able. Environmental studies, weather analysis. So basically, weather forecasting से इसका काफी ज्यादा relation है. You will be surprised to know. Second thing, I was trying to pronounce this morning. Always I try to pronounce this word. So it's just something that boggles my head. I'm really sorry. Now this interesting thing is weightlessness. So the question is how we happen to feel our weight. हम वेट को एक्चुअली फील कैसे कर पाते। तो अगर तुम लोग मैकेनिक्स थोड़ा पढ़े हो तो वेट, जब हम अपनी वेट की बात कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे थे, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ जब पढ़ रहे होंगे। सपोज कर लो ये सर्फेस है, इस सर्फेस पे मैं खड़ी हूँ या तुम खड़े हुए, ठीक है। तो तुम्हें अपना वेट
फील हो रहा है, इसका मतलब फिजिक्स के टर्म में कौन सा वैसा चीज है जो तुम्हें तुम्हारे वेट को मेजर करके देगा। यानी कि लेट्स मेक इट मोर सिंपल। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, अगर मैं अपनी एबिलिटी लिखूँ तो एबिलिटी क्या लिखोगे तुम मेरा? ऐसे लिखोगे ना कि मुझे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एनजी, और सिर्फ मैं सरफेस के कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस आई मीन वेट हियर, इनको क्या बोलोगे? एनजी। तो हियर एन जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, वो हमें क्या दे रहा होता है? वेट। तो यहाँ पे हमारा वेट हो गया एमजी। एमजी को वेट कह देते हैं, बट ऑलवेज एमजी इज नॉट द वेट, विल चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ नॉर्मल यू आर गेटिंग। जैसे अगर मैंने कहा कि चलो अभी भी मैं खड़ी हूँ, बट मैं अब लिफ्ट में खड़ी हूँ और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन से, अब तुम मेरा इक्वेशन लिखो। तो अगर अब इक्वेशन लिखोगे तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा क्योंकि मैं सरफेस पे हूँ, है ना, मैं सरफेस को डाउन प्रेस कर रही हूँ, सरफेस मुझे अप की तरफ फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड को, एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दिस इज mg, and lift is going up. I'm also sitting in the lift. I will also go along with lift in the up direction with acceleration a. तो यहाँ पे n माइनस एम जी को आप क्या रखोगे? एम ए। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? एम जी प्लस एम। तो कितना आया? एम जी प्लस ए। यानी कि हमारा वेट कितना हुआ? अब हमारा वेट गेन है ना, हमें भारी भारी फील होती है। तो देखो, तुम लोग एक चीज देखना, जब तुम लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो हमें थोड़ी हेवी फीलिंग आती है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आ रहे होते हैं ना, हमें लाइट फीलिंग। झूले में भी नोटिस करना, वेन यू आर कमिंग डाउन द झूला, तो हमें ऐसा लगता है कि सारा अंदर से जितना बॉडी के बाहर आ जाएंगे, तभी वेटलेसनेस फीलिंग। so that is light feeling, and because of that that nervousness comes in our mind. ठीक है, so weight is nothing but the normal reaction. Then okay, so why weightlessness? Weightlessness का मतलब तुम्हारा नॉर्मल हो गया जीरो। नॉर्मल जीरो अगर हो गया तो हम कहेंगे हम है वेटलेसनेस। ठीक है, डन। यानी कि अगर हमने एक लिफ्ट लिया और लिफ्ट का एक्सेलरेशन अप कर दिया, चलो एक काम करते हैं। सपोज करो लिफ्ट में मैं बैठी हूँ जो कि नीचे की तरफ जा रही है, जी एक्सेलरेशन। अब इसको वेट कैसा हो? तो चलो इसका इक्वेशन लिखते हैं। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे जी, मैं नीचे आती जी से, तो यहाँ पे mg में डाउन आ रही नेट फोर्स दैट इज mg माइनस n। n माइनस mg नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैं डाउन आ रही हूँ नेट के साथ। सो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखोगे, तो mg माइनस n एंड दिस वुड बी इक्वल टू मास ऑफ v इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हूँ? g से, तो यहाँ पे mg हो गया, कट हो जाएगा, ये हो गया 0। यानी कि यहाँ पे मुझे वेटलेसनेस फील हो, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ वजन नहीं है। Then, so weightlessness is all about this calculation normal reaction that will give you. It means zero when we are experiencing weightless. जैसे यहाँ पे देखो, ये सैटेलाइट को कहा गया है कि ये जो सैटेलाइट है वो इसके अंदर अगर तुम हो, सैटेलाइट के अंदर एक कमरा है छोटा सा, उसमें अगर तुम बैठे हो तो तुम वेटलेस फील करो। नाउ व्हाई दिस विल हैपन? In satellite, everything inside it is in state of free fall. जैसे यहाँ पे इनको देखो, ये also experiencing weightlessness। अगर तुम लोग चाहते हो एक्सपेरिमेंट कैसे, तो you just look at it carefully। जैसे यहाँ पे ये सैटेलाइट है, इसके अंदर मैं हूँ, और ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो if you look here carefully, यहाँ इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी कुछ होगा, है ना? और उसकी वजह से मुझे फोर्स लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं अपना एग्री, ठीक है? तो चलो मैं अपना एग्री लिख के बताती हूँ। ये मैं हूँ, मेरा अर्थ की तरफ मेरा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ मैं बोल रही हूँ। कितना फोर्स लग रहा होगा? एम जी, जी एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, एंड नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज आई एम रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ सैटेलाइट, तो नॉर्मल एन। देन अब देखो, ये सैटेलाइट जब राउंड राउंड जा रहा है तो ये इसका एक एक्सेलरेशन है towards the center, that is your centrifugal force।
because of that centripetal force. So mg minus n will be equal to what? mv squared by r, क्यों ये लिखोगे, और यहाँ पे r क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरे को मैंने r लिखा है। और b का वैल्यू कितना आया था, अगर याद करो b का वैल्यू आया तो g बाई r रूट अंडर जी बाई r। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी एन क्या था, मास ऑफ अर्थ यहाँ पे होगा बाई आर का स्क्वायर। और इफ यू रिमेम्बर जी इनटू मास ऑफ अर्थ का, आई मीन जी मास ऑफ अर्थ बाई डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस अर्थ के ऊपर का है, तो ये वैल्यू क्या होगा, जी के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हियर दिस v स्क्वायर बाय r इज नथिंग बट g, राइट। तो mg माइनस n इक्वल टू mg ही दिख रहा है, तो यहाँ पे n को क्या है, 0, डन। v स्क्वायर बाय r क्या है, g है, नथिंग बट g, डन। so a is 0, so वेक्टर फीलिंग आई, डन। why this person is weightless thing, because this person is like this pattern going around. तो हमने क्या पढ़ा, हमने लास्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को पढ़ा, एनर्जी दो सिस्टम के लिए ऐसा था, आई डिस्कस दिस ऑलरेडी। तो अगर हमारे पास बहुत पार्टिकल्स तो सारे पेयर्स को लेकर, तो m1 m2 m1 m3 m1 m4 m2, उसमें सारे पेयर्स को लेते हैं। इसकी वेलोसिटी क्या था, आई डिड डिस्कस दिस इन रिवीजन, पढ़ाया था मैंने। तो ये वेलोसिटी कोई भी चीज जो रेस्ट में है, उसको स्केप करने के लिए जो वेलोसिटी देनी चाहिए, दैट इज योर स्केप। तो स्केप वेलोसिटी के पर्टिकुलर इसके सरफेस पे कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट में है, उसको अर्थ के बियॉन्ड भेजने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए, है, टू स्केप, दिस इज स्केप वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू होता है 2g r is radius time period of Earth satellite by r by v, और radius यहाँ पे रेडियस r प्लस h, इसलिए यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लिखा है, you already know this। वेलोसिटी ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट क्या होता है, जी r, r में यहाँ पे r प्लस h लिखा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जी एन की m बाई r, potential energy minus by r, total energy का phase of the magnitude kinetic energy, but it with negative sign, negative sign says that system is bond, मैंने बताया है ना, this says system is bond। Circular orbit around the moon equatorial plane with time limit, this is called geostationary satellite, and polar satellite called क्या होता है, पोलर रीजन से क्रॉस करता है, यानी कि अर्थ ऐसा है, पोलर सैटेलाइट का और क्या होगा, वर्टिकली ऐसे कम, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी स्टडी, लेट्स डू सम क्वेश्चन। So take some 1 minute of time or 1.5 minutes and let me know what answers they have given. Yes, I'm here only. Okay. I hope you have covered it. So the escape velocity for Earth is v, done it? यानी कि let's write the formula root under 2g r, ये फॉर्मूला हमने लिखा है ना, escape velocity का for Earth। g को भी ब्रेक कर दो, एक काम करते हैं, मास के टर्म में लिखते हैं 2 into g m
mass of earth by r का square into r. तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रॉ टर्म्स में अगर हम लिखे फॉर्मूला तो कितना है 2 g m by r. This is the formula. And escape velocity is given as v. Now a planet has mass 9 times that Earth and radius 16 times that. उसका escape velocity क्या होगा? So let's say that is v e. तो क्या लिखोगे 2 into g तो कांस्टेंट है मास क्या है इसका 9 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ and this is how much radius is 16 times that of earth. तो ये कितना आएगा this will be 3 by 4 root under 2 me divided by r. And this is equal to what? This is equal to e. So this is 3 by 4 b. So the answer will be what? It will be e. So this is your correct answer. Now let's do this question. Take again 1.5 minutes and solve. So now let's solve this question. So two satellites A and B go round the planet P in circular orbit having radius 4r and r. So there are two orbiting satellites. ठीक है एक का रेडियस क्या दिया हुआ है 4r and this is for satellite A. Done. And then there is another satellite whose radius is r and this satellite is what? It is B. If the speed of satellite A is 3b, the speed of satellite B will be what? So speed of satellite A is given as what? 3b. और speed हम कैसे लिखते हैं? G mass of इसके around वो जा रहा है अर्थ है तो mass of earth divided by radius 4r. So this is equal to what? 3b. Now what will be the velocity in second case that we have to calculate? आप यहाँ पे v dash लिख दो और यहाँ पे क्या करोगे? G m by what? This is your r. That is radius is r. So this is it. Now let's see 3b by v dash is equal to how much? This is half g m by r. G m by r cancel होगा 1 by 4 का root under 1 by 2. So v dash is equal to how much? 60. So correct answer will be what? Correct answer will be your B. Done. Now let's move ahead. This is another question, and this is very important question. All these questions are from previous year examination of JEE Mains and NEET. Okay, so these questions are really very important. Now again take your 1.5 minutes and let me know your answer. Okay. Okay, I will do one thing. I will launch the tool.
So I hope you all must have tried it. Now let's do it together. So a satellite of mass 10 to the power 3 kg, mass is revolving in a circular orbit of radius 2r. Okay? If this much energy is supplied to the satellite, it would revolve in a new circular orbit of radius. So there is a satellite. Then let's say this is Earth's ka center. So this dot is the Earth, and then there is satellite here orbiting at a radius 2r. Then so this satellite is orbiting. Now, what is the concept behind this question solution? It's like if satellite is in the orbit 2r, in the orbit of radius 2r, it will have some energy, right? So energy of satellite as of now will be how much? It will be minus g mass of Earth into mass of satellite divided by 2 into radius of the orbit. So in this case, it is 2r. So this is the energy of satellite as of now. Now what we are doing, हम लोग यहाँ ये कर रहे हैं कि इसमें कुछ एनर्जी को ऐड कर रहे हैं. कितना एनर्जी इसको हमने दे दिया, so इसको हमें कुछ ज्यादा एनर्जी दे दी. 10 to the power 4 by 6 r j. This much positive energy we are giving. So what will happen now to this satellite? Will it start orbiting in a radius of larger value or a smaller value? So just see. If satellite is orbiting in, sorry. So if satellite is orbiting in any radius, its total energy is given as minus gm of satellite mass of Earth divided by radius. Done. So this is negative sign. As r will increase, this by magnitude wise, this will decrease, and with negative sign it will increase. And let's say -1 is greater than -2, right? So if the value is decreasing, it means with negative sign it is increasing. Then, okay? So if energy is increasing, we have added some energy to it. So if energy is increasing, it means radius will increase. कहने का मतलब, if we are getting certain positive energy to the satellite, it will start revolving some larger orbit. Let's say it starts revolving this larger orbit. It's the radius of which we are there. So what will happen? Initial energy of the satellite plus whatever energy you gave to this will be equal to energy of the satellite in the orbit in which it starts revolving after gaining energy. So its energy will be g ms m divided by 2. Now the question is how to solve it. We don't know ms, we don't know me. R is the radius of Earth. So let's do something. G का वैल्यू कितना दिया हुआ 10. यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज करने वाली हूँ. G का वैल्यू 10 है और G किसके बराबर होता है? G मास ऑफ अर्थ divided by radius of Earth का square. And this is equal to 10, right? This is given in the question. Now let's capitalize on this. I mean, let's use this thing. तो ये तो हमारा जी एम एस के टर्म में है, जी एम एस के टर्म में है, तो इसको भी थोड़ा ऐसे लिख दो. This is not in term of GMEM. So let's convert it into that. So 10 to the power 4. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 into 10 to the power 3. इसको क्या लिख सकते हैं? 10 into 10 to the power 3. अब 10 को क्या लिख सकते हैं? GME by R square. So यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ GME by R का स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पे ऊपर भी है तो वो r तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ r. Now 10 to the power 3. So 10 to the power 3 is what? This is the mass of satellite. So here 10 to the power 3 की जगह में मैं लिखने वाली हूँ r. यहाँ पे पहले से क्या था? 6 था. So this is your 6. And this is equal to minus gmx by 2r. Now the question is simple. We can simply solve it and write the answer. So let's solve it. इसको आप एक काम करो, डिनोमिनेटर को 3 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से कर दिया 2 माइनस 3 प्लस 2 इट विल बिकम माइनस 3 and just divided by over r is equal to minus 3 then we divide by r. तो ये तो कैंसिल हो गया, r is equal to 6. So this is your right answer. This is how we need to think upon this. क्योंकि अगर हम एक्चुअली पुट करते जाए, अगर हम ये सोचने लगे कि बात को पता नहीं, चलो
अगर तुम्हें पता भी है then you are trying to put those values, it will become very much complicated. So you need to do something. Right? Mhm. Now, do this question. Let me take your time. Okay? Take 1.5 minutes of your time and do it. Hope you are able to understand the question. If you are having difficulty, then let me explain it to you. There are two planets A and B having mass m1 and m2. And they move around sun in circular orbit of radius r1 and r2. So let's say this is sun. ठीक है, एक सैटेलाइट जा रहा है प्लैनेट r1 ऑर्बिट में. ठीक है, इसको आप r1 बना लो. ठीक है, and its mass given is how much? Its mass given is m1. And then there is another orbit. This is r1. Then there is another orbit in which another planet is going round and round. मेरा सर्कल बहुत ही खराब है, सही से बनाना. यहाँ पे देख लो, ये ले लो m2. This is motion radius r2. We can do a, that is m1 is given as a, and for this it is m. And one more thing is given, angular momentum value is given, that is 3L. Now what we need to apply here? 3L and 3L निकालना है. Angular momentum is given. Done. So we already know, like Kepler's the second law अगर देखो तो L by 2m, that is for any satellite. हमने पढ़ा था कि कोई भी एक बॉडी के अराउंड अगर दूसरी बॉडी जा रही है, और हमने सब प्लैनेट के लिए बेसिकली इसको पढ़ा. तो let's fix it here. डन है. सो सोलर प्लैनेट के लिए हमने एक चीज पढ़ा था कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम बाय 2 into its mass is equal to how much? Rate of change of area, that is the aerial velocity. So अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सैटेलाइट की एरियल वेलोसिटी की बात करें तो उसकी वो एक टाइम पीरियड में कितना एरिया कवर कर रहे हैं? पाई r1 स्क्वायर. एरियल वेलोसिटी क्या होगा? एरियल वेलोसिटी एरिया बाय टाइम. So pi r1 it is covering in how much time? T. So it can be written like this. ठीक है. Similarly सेकंड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3l by 2m. This is again m1 and this is your m2. So this is equal to pi r2 का square divided by t. ठीक है. So now let's do one thing. ta by tb आप निकालो. यहाँ से क्या? तो l इन दोनों को डिवाइड कर दो. l by 2 l कैंसिल हो जाएगा. And this will become 1 by 3 m2 by m. है ना? This is equal to how much? Pi will get cancelled. r1 square divided by r2 square into tb by t. So this is what we are getting here, right? So this is what we are getting here. Now let's write here what we are getting here is TA by TB. क्योंकि हमें निकालना क्या है? TA by TB. तो एक काम करो, TA by TB को लिख दो. तो यहाँ से अगर आप TA by TB लिखते हो तो क्या मिलेगा? So this will be your r1 by r2 का square. r1 by r2 का square into क्या होगा? Into होगा 3 into m1 by m2. So this is TA by TB we are getting, but here there is no option as given. So we work more and फिर क्या लिख सकते हैं? एक हमने केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा था. एंड थर्ड लॉ में हमने पढ़ा है कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब ऐसे होता है. टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. यहाँ से टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? r1 क्यूब बाई r2. यहाँ से अगर हमने किसको रिप्लेस किया? r1 बाई r2 के स्क्वायर को अगर रिप्लेस किया तो we can do that here. Let's try. Okay. तो r1 by r2 देखो किसके बराबर है? r1 by r2 यहाँ से हो जाएगा
TA बाई TB का कितना पावर जाएगा, 2/3 है ना। और बाकी के स्क्वायर को लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, TA/TB का पावर 4/3। सो लेट्स राइट नाउ, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में। सो TA/TB किसके बराबर था, R1/R2 का स्क्वायर, एंड R1/R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू TA/TB का पावर कितना ले रहे हो, 4/3 इंटू 3m1/m2। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट, ठीक है। सो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 4/3, इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा TA/TB का पावर 1 माइनस 4/3, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 3m1/m2। So this is equal to 3m1/m2. If you are going to solve it, then TA/TB का पावर -1/3 is equal to 3m1/m2, ठीक है। एंड if you are going to solve it, TA/TB अगर सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 3 का पावर -3, और m1/m2 का पावर भी कितना जाएगा, -3। So if you are going to solve it, now it will become 1/27 into m2/m1 का whole cube. So this answer is nothing but answer number 3. So this is what we are going to do. Now this is the last question we were supposed to do. So yeah, solve it and let me know what you did. ठीक है, let me know the answer. So what is the question given here? Minimum energy required to launch a satellite of mass n from the surface of Earth. So this is Earth of radius r, and in mass का satellite है from the surface of Earth of radius r in a circular orbit at an altitude 4. So here satellite is kept on the surface of Earth, and we have to take it to what radius? We have to take it to radius 2r. So how much energy we need to give? The minimum energy required to launch a satellite of mass n from the surface of Earth of radius r in a circular orbit at an altitude 2r. So again, what you have to do is you have to go with energy conservation. ठीक है, जैसे जब surface पे it has some energy, ठीक है, and let's say that energy is A1. In that energy, you will be adding that minimum energy. So A minimum that will be equal to energy of satellite in the orbit. So you just have to do it. I hope you will be solving it and then letting me know the next. So do it as a homework and also solve lots of minimum questions from previous years. Also, we are getting the question. Okay? So everyone take care of yourself. We will meet tomorrow.